Chartered accountants ever get into investment banking, venture capital, private equity and make a name for themselves, or for that matter at least get an entry into that field? A lot of questions have been raised on that. Someone asked me, tagged me on LinkedIn because of that. It became quite a viral post. A lot of people commented and gave their thing because CAs do not represent an assured delivery in terms of communication skills. They are not as smart as an MBA is. So most investment bankers, so I'm talking about the top ones, okay. So आप कंसल्ट में जाएंगे तो बेन BCG McKinsey है अगर कंसल्टिंग की बात करें, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच और a Citi और a Goldman, okay, और a CLSA in the equity research space, a VC में कराइल ग्रुप, ओके, एकदम टॉप नॉच, एकदम प्रीमियम, क्रीम डिला क्रीम को ये लोग, मैट्रिक्स पार्टनर्स है ना जिसने ओला वगैरह में पैसा लगाया है. सो ये लोग जब पैसा लगाते हैं, सेक्वा कैपिटल, yes, it is a very natural dream that at the age of 22 if someone on the B school is getting these jobs, why can't a chartered accountant get that? But friends, we will have to live with this reality that since investment banking worldwide is not a practice which has a lot of people, मतलब एक बहुत thin layer रहता है within which this operates. So if you look at typical investment banking operations, or a lot of funds, a Singapore GIC fund might have maybe 15-20 people in totality out of India. तो वहां पे क्या होता है, इतना restricted टीम साइज रहता है, एंड प्लस अट्रिशन भी रिलेटिवली लो रहता है बिकॉज पीपल इवन एंटर एट 40 लाख 50 लाख सैलरीज. सो इफ दे वांट टू मूव आउटसाइड दे कैन नॉट, सो ईदर दे क्विट एंड डू देयर ओन थिंग बिकॉज वो एक चीज है. तो व्हाट इज द वे आउट? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री में जा सकते हैं? आई थिंक prima facie they will not come to a campus, don't expect that. Now when you apply to firms, they will clearly tell you that we recruit from B school campuses, so we are not interested. So what is the way out? The way out is probably, let's say it has happened with someone who joined a SEBI, and because he joined a SEBI and all the investment bankers used to come to him, he got developed that connects, and today he is in Axis Securities in investment banking, core investment banking. So the path to success is not a direct entry into Axis Securities, but to get into Axis Securities, let's say through a SEBI. For that matter, you might want to join a boutique investment firm where you do work on transactions, buy side or sell side, but they are not very high paymasters. जैसे आप equity research space में देखें तो an Edelweiss or a Motilal Oswal or an angel broking will not pay as much as a CLSA or a JP Morgan or a Goldman in equity research in their front office will pay. But you might want to join an ICICI Securities for that matter and work on real life transactions, and then build your CV, develop connects. Because आप मान लीजिए कि इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, किसी कंपनी की IR कॉन्फ्रेंस में जहां उसका CFO क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करता है, यू गेट टू मीट पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट कंपनीज. देन वो आपके नेटवर्किंग स्किल्स के ऊपर है कि वेदर यू आर एबल टू फ्लैश दैट स्टोरी, दैट 60 सेकेंड एलिवेटर पिच. कहीं ना कहीं आपको एक डील का ऑप्शन मिल ही जाएगा जहां पे पीपल विल वांट टू हियर योर स्टोरी आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो एक फ्रेशर को पीपल नहीं देना चाहते हैं चांस, बिकॉज एक फ्रेशर के बारे में क्या होता है ना, बहुत इफ्स एंड बट्स है. जैसे टिपिकली लेट्स से आई टॉक टू अ सीए फ्रेशर, he will say that his MS Excel skills are very advanced, but he does not know how to do financial modeling, which a typical MBA will be able to do definitely because वो 5-year forecast बहुत बनाता है. यहाँ पे बच्चा बोलता है सर ये सब तो 5-year forecast के लिए जितना डेटा होता है वो तो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, हम तो सिर्फ कैप बच कर सकते हैं. But what if I have to go to a client and help him or her develop that forecast with all the assumptions and then build sensitivities on that to arrive at valuation? वो एक बहुत एक डिफरेंस हो जाता है सीए और एमबीए में. तो सीए के लिए वैक है, वो केडी निकाल देगा क्वेश्चन में, बट वैक ही जो पूरा खेला है ना रियल लाइफ में. सो आई आस्क अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हु आर फ्रेशर्स कि भाई बीटा कैलकुलेट कैसे होता है. तो बोले सर वो तो क्वेश्चन में दिया रहता है, बट देन इट इज अबाउट टेकिंग स्टॉक मार्केट रिटर्न्स,
individual returns and then doing a correlation. If you ask them how to do it in Excel, maybe they do not know that you can run the regression pack and the tools data analysis pack and get those coefficients of variation. तो उनको लगता है कि वो typically वैसे ही होगा, डेल्टा 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 करके वो फॉर्मूला लगाएंगे कॉफ. एक टिपिकल बी स्कूल वाले को मे बी वो डिफरेंस पता है कि कैसे होता है. पीपीटी स्किल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर्स. इन टर्म्स ऑफ बी स्कूल वो 2 साल में इतना प्रेजेंटेशंस बना देते हैं. तो ऑल्सो दी fact of making presentations as also delivering presentations in front of any audience, they do not have any stage fear. अगर stage fear होगा तो 20 स्कूल से निकल ही नहीं पाएंगे वो लोग. They will get failed grade in most of their courses because you necessarily have to present to the professor. He marks you on that and only that happens. So many clubs happen, so many speaker series happen. तो CA versus MBA में आपको कहीं ना कहीं एक difference रहेगा. जब मैं ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू हैव अ क्लियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम द एमबीएज इन दैट स्पेस. प्लस यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, which in decision making becomes very important. Let's say you meet someone who is a marketing guy. You will not even know what is the difference between a B2C and a B2B, and what is impulse purchase, and what is strategic positioning in terms of brand positioning. So how do you initiate conversations might become a challenge. How do you look at sector analysis? आपने कभी किया नहीं है ना. So let's say कि मैं एक मैट्रिक्स पार्टनर्स और एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप मेरे पास आया है, उसको फंडिंग चाहिए, तो आई विल हैव टू लुक एट कि व्हाट विल बी द वैल्यू ड्राइवर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, कहाँ ग्रोथ आ सकता है, क्या कैगर होगा. एक पूरा वो इस इंडस्ट्री का पेस्टेल और पोर्टर्स 5 फोर्सेस, बीसीजी मैट्रिक्स, मैकिंजी 7S फ्रेमवर्क, 4 P's, 5 C's, a lot of things can be done ना. मतलब आप उसमें देख सकते हैं कि exactly where is that red ocean, blue ocean. तो ये सब जो strategic things हैं, red ocean, blue ocean भी बहुत important है. तो क्या उस चीज के बारे में उनका knowledge है? Obviously कोर्स करिकुलम में भी आपको नहीं देता है, तो या तो वो आप knowledge खुद acquire कर लें and then tell people कि sir I will be as equipped as an MBA, and on the delivery front please just give me 5 minutes of your time just to hear me out, test my financial modeling skills, because आज के डेट में financial modeling आप YouTube देख के सीख सकते हैं. There are books on financial modeling, online courses on that, or you can go to Udemy and do a financial certification, है ना. And maybe start off with not the big names but the mid-sized names and then move up the pyramid. That is also a very good thing. And maybe investment banking is not your cup of tea. I mean, talk to people who are actually into investment banking, VCP. There's a lot of money floating around, but then they don't have time to enjoy that money with their near and dear ones. And the last thing which I will tell you is that अगर आपको लगता है कि मैं CA करके गलती किया और शायद मैं MBA करता तो मैं वो टॉप नॉच आई बैंक्स में जाता, उसका कोई गारंटी नहीं है. सो टिपिकली IIM कैलकाटा छोड़ के बाकी जितने भी IIMs हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर से या VCP का बहुत लिमिटेड रोल्स आता है. एज आई टोल्ड यू, बिकॉज दिस इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन अ वेरी थिन लेयर, वेरी लिटिल अल्ट्रेशन विल हैपन बिकॉज दे आर वेरी हाईली पेड. सो सडन स्पर्ट्स इंडस्ट्री एक्टिविटी हो गया कि पूरा IPO का एक्टिविटी बढ़ गया है, सबको डील कराना है, तो वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी रिक्रूट करेंगे. सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर बैंक ऑफ अमेरिका, Merrill Lynch has put advertisements in newspapers. On a functional level, CA, MBA जब actual start करेगा, I'm not very sure whether there will be much of a difference because I know I have interviewed. आप my CA story में जाएं तो आकाश खेड़िया एक बंदा है, कलकत्ता का चार्टर्ड अकाउंटेंट है. He's a rank holder with a Deloitte articleship, then joined the back-end support of investment banking in Deutsche. Moved to front and then went to Macquarie and now is in Singapore GIC. So with that skill set also it is possible provided you can articulate yourself in the right manner, display that right intent कि हाँ मैं जिद्दी हूँ, मुझे investment banking में ही काम करना है. तो I am very sure that there will be takers for that in the market, and rest आपका नसीब है, आप अपने नसीब से नहीं भाग सकते. So work relentlessly towards that goal. And I'm sure that some of you will definitely be able to, if you are very keen on that. For example, I am not very keen on an investment banking job. I think it's a
वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे पूरा वॉट लग जाता है. बट आई थिंक एट द एज ऑफ 22-23 दैट्स नॉट योर प्रायोरिटी. So you can as well try your luck on this. Thanks friends for watching. In case I have made any mistake, if you need any further clarifications, please comment in the section below. Please like, subscribe, share it with your friends. It gives me a lot of encouragement, because I'll honestly tell you, it takes a lot of time to create these videos, create content. So I would be grateful if you can actually do that. There are now 11,000 people who actually like me in some way or the other. I would want that number to swell to a lakh, and it will all be possible with that individual one support of yours. Bye bye. Thank you.